Good morning, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. I, Ayush Upadhyay, on behalf of Finance Club, welcomes all the future leaders to this webinar on campus preparation, industry orientation, and jobs placement, organized by Finance Club in cooperation with CampPrep. The Finance Club of IMS GAVV Indore is a student-run initiative formed under the guidance of Director Dr. Sangeeta Jain and Faculty Coordinator Dr. Manish Kant Arya. It was formed and given the shape of committee by Mayank Goyal sir and Archana Diyarsa ma'am. The core team of the club consists of Saloni Jain, Pooja Saluja, Muskan Agrawal, Rohit Arya, Mitali Patidar, Aditi Pandey, Shilpi Kushwa, and Tarun Pawar. Finance Club has successfully completed 10 plus events in this session and will continue to do our best to serve as a portal for our students to participate in various activities that help them develop their analytical skills and practical knowledge. In keeping with our objective, today we are hosting a master class on one of the frequently used word in every B school, placement. To deal with any interview, we need strategy, and the basis of any strategy is what and how. In this masterclass, we will get to know what are the requirements of the company, what is its selection procedure, how to select the best company along with futuristic profile, how to crack GD and PI of your target company. By the end, you will leave feeling ridiculously confident about how you should start preparing. Also, a free customized resume from the expert team of Cambric will be provided to you. It's my pleasure to now welcome the guest speaker for the today's session, CA Gunjan Srimer sir. Gunjan sir is a lead trainer at Camprep. He is an IMI Indore alumni having multiple years of industry experience in India and abroad with major multinational companies. Thank you, sir, for collaborating with us today. Just a little housekeeping before we start. All the participants are requested to keep their mic off during the session and drop your question in the chat box. Also, stay tuned for the results of registration, the budget analysis event 2022, which will be announced at the end of this webinar. Now, without any further ado, we will turn the time over to Gunjan sir. Sir, over to you now. Thank you very much. Thanks for such a wonderful introduction. I would like to, first of all, thanks the Finance Club of IMS. And I believe that I definitely do thank for the wonderful initiatives that the Finance Club is taking on a continuous basis. Mayank Goyal, Ayush, and all the senior members of IMS Indore who have been part of this initiative. I must thank you. This is definitely an important discussion today that we'll be doing today. And before we do start this discussion, right, I must tell you that this is definitely a very, very vast topic. And so before I further start, am I properly audible and visible to everyone? Yes, because I'm getting some messages on that. No, sir, you are perfectly audible and visible. Perfectly audible. All right. Thank you very much. So this is definitely an important point that, as Ayush has said, that placement is something which is a common buzzword at the campus. And today we'll be talking about that. It is a very vast topic, and covering it up in 1.5 hours, 90 minutes is definitely very difficult. But what we have done is, like, we have kept it in a way that everybody can understand certain things, which is so that they can start their preparations from now onwards. This particular webinar is being organized at a very right time, because most of the companies starts coming from the month of August, September, and anybody definitely needs some time for preparation, and this is definitely the right time to start preparing for it. I understand that people have their internships, their certifications, and college engagements and all, but apart from that,
this is one thing which definitely you need to keep in mind, and we'll be further talking about it in our next slides. One more thing is that today we'll be talking about certain important things. So I would request all of you to keep a handbook ready, notebook ready, and note down the important points, because end of the session you will have almost 10 to 12 very important points, and those could be the action points, or that could be the starting of your campus preparations. So if you can note down those points, okay, that would be very, very helpful for each of you. All right, so let's start with the this is basically, as Mayank has as Ayush has mentioned, that we are into campus preparations for last 5 years, and we have helped many students in getting the job of their choice. I have been into industry for almost 10 years. I have started my career with Idea Cellular, and then I worked for Tikona Digital Networks. I worked abroad also for almost 2 years. That was in Malaysia. And apart from that, I've been at the CXO for Apollo Hospitals. And as when I was completing my studies, so I did my industrial training with the Bank of America. So it has been almost 3-4 sectors where I've worked intensively. And post all these years of experience, we have started the trainings for campus. And so far, we are very proud to say that we have helped more than 1,000 students in getting the job of their choice. So one thing which I personally believe, can you please mute yourself? ऐसी भावनाएं भी इसके अंतर्गत व्यक्त की गई हैं, ऐसा आपके द्वारा। So, may I request everyone to please mute their mics. All right, that's the interesting part about online trainings. All right, so what I was saying is that so it has been a quite number of years of experience in the industry, and then some years in the training side. And we have realized that there is a gap between the college life and corporate life. And this gap basically we wanted to fill up. So of course, like the training, the college, when you study about various subjects, there are definitely very important subjects. But what are the expectations from the corporates? When I was in corporate, we have conducted multiple interviews for our teams and realized that these are the requirements which we personally expect from the freshers. So आज के जो सेशन में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और आप उन्हीं लाइंस के ऊपर अगर प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, so it will certainly going to help you a lot. So this is the theme basically, that this particular jump needs to be good enough to reach to the other side. So आपके पास, I personally believe around 3 months हैं, और इन 3 months को अगर आपने बहुत wisely utilize करा, so you will definitely reach to the other side quite successfully. These are the questions that normally gets discussed in the classroom about the campus placements. So one point is basically about the kind of companies. Okay, for example, people who are from finance stream, they basically think that whether I will get something related to core finance or not. Similarly, like people who are in marketing, they also have the same thing. So everyone from the various stream, they personally think that whether I'm getting something in the core finance stream or not. Secondly, then question comes around the test that companies do conduct. Okay, for example, personality test or group discussion or aptitude test. What are the selection processes? And third is about the self-clarity, whether I should join a job which is in a startup, or whether I should join a company which is quite established. Whether I should join a company in my hometown, or should I join a company outside my hometown? So these kind of questions generally comes.
right? And so we have divided this entire session into 3 different parts, okay, where we'll be answering all these questions. All right, so just a moment, just give me a moment. All right, so basically this is the theme for today's webinar, and this is basically a scene from a very famous movie. Okay, so you can just have a look at and enjoy this one. All right, so see, like in this particular case, yes, if you remember, this is from the famous movie, right, that we met. So nobody came to pull the chain, right? आप लोग के केस में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स तैयारी स्टार्ट करते हैं और कैंपस के लिए वेट करते हैं, एंड देन सडनली द कंपनीज स्टार्ट कमिंग इन, ओके, और जैसी कंपनीज आना स्टार्ट होती है, देन दे रियलाइज दैट दे हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशंस, राइट? ये बहुत कॉमन होता है। अभी लाइक सडनली आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने सीनियर से जब बात करेंगे, दे विल टेल यू दैट एक दिन या 2 दिन पहले कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज बताया जाता है कि कंपनीज आने वाली हैं, और सडनली 2 दिन बाद इंटरव्यूज शेड्यूल हो जाते हैं। सो ये बहुत कॉमन स्टोरी है कैंपस के अंदर कि लाइक यू वंस द ट्रेन पासेस अवे एंड देन स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपरेशन, ओके। आप काफी सारे आपके सीनियर से बात करिएगा, एंड देन दे विल टेल यू अबाउट द कैंपस सिनेरियो। सो वन थिंग दैट यू शुड डू इज डेफिनेटली you should specifically talk about the campus related things to your seniors. As I told you, there are 3 things that we will be discussing today. One is understanding industry and job markets. Second is self-clarity. And third one is campus preparations. Of course, like most of our time will be spent on the campus preparations discussion. MBAs, as you know, they are working in all sectors. Name any company, and you will find that the top management is basically occupied by management graduates. So that's a very good thing about your studies, that the MBA degree is acceptable almost in all companies. Wherever you go, you will find that MBAs are working. If you talk about top management, yes, 90% of top management positions are filled by MBAs. जिन कंपनीज में मैंने भी काम किया है, वहां पर मैंने देखा है हमारे बॉस जो थे वो MBA, CEO MBA. सो ज्यादा करके जितने भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट दे आर ऑक्यूपाइड बाय मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स. अब ये जो नंबर्स हैं, राइट, व्हाट आर दीज नंबर्स? ओके, दैट let me understand from your side. Okay, so let's make it a 2-way also. Okay, so I'm just allowing yourself to unmute yourself. Okay, so anybody who can tell me, like, what are these numbers and what are what is this slide all about? Anybody?
Yes. Maybe it signify that 10% are the CFOs, 5% are the CM. All right. Good try. Anybody else? Under CEO, there are many subordinates which are there. So mostly like the most of the percentage is covered by COO and CFOs and CSOs, and rest other positions are filled, like minimum amount of numbers are filled by CMOs and CHROs and admins and IT and other sectors. All right. Good. Good. Okay. So both of you are right. Primarily, the companies on the top, we have CEOs, right? So, and under him, then there are different verticals. Okay. These verticals are finance, marketing, sales, HR, operations, admin, IT, and others. Generally, this is the bifurcation, and then it may little bit vary based on company to company. Okay, there may be some function. Maybe if it is a factory, then you will find the person who is the production head, right? Now, what are these numbers, right? That is the question. So this number is a broad depiction of the total number of employees working in any organization. इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉइज हैं, 100 एम्प्लॉइज आर वर्किंग, then 40 are working in sales, 25 are working in production or operations, around 10 are working as a in finance team, 5 in marketing, 4 in HR, 4 in admin, right? समझ रहे हो आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, राइट? क्योंकि आपको, आप में से काफी लोगों को ये है कि हमको कोर फंक्शन में जाना है, राइट? नाउ कोर फंक्शन की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमको इंडस्ट्री को भी समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में डिमांड कैसी रहती है, राइट? सो इन अ टिपिकल कंपनी the demand for sales people are always very high, and that's why you get in the college also that सबसे ज्यादा जो requirements आती है वो sales profile के लिए आती है, right? So ये एक आपकी understanding के लिए है, although in the further slides we will talk about individual functions, but I believe this is something which you should keep in mind, a typical corporate structure जहाँ पर कितने % employees किस function के अंदर में काम करते हैं. अगर हम लोग फंक्शन, काफी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम से हैं आज, राइट? एंड सभी स्ट्रीम्स को थोड़ा थोड़ा कवर कर पाएंगे, नॉट इन टू मच ऑफ डिटेल, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट दैट विल ट्राई टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरी फंक्शन, एंड जो भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं, दे विल गेट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट. So if we talk about HR function, yes, typically it is recruitment, training, development, payroll, and compliances. So if you want to become HR head tomorrow, you have to have an understanding about sourcing, that is recruitment, training and development, payroll, and compliances, right? So payroll, like how the salary structures are defined, compliances means all PF, ESIC related things. So this is not only theoretical but practical understanding is required, okay? And this holds true for each and every kind of functions. If we talk about finance, maximum companies which I see for finance vertical, okay, they come for financial services and advisory. So you like if you see your previous campus, like last campus was fantastic, okay? If you see RCCM, Deloitte, KPMG, ICICI Bank, HDFC, HDB, Alliant Group, right? Morningstar, S&P Global. This all falls under category of financial services and advisory, right? Then there are banks which participated like Bandhan Bank, HDFC, Access, like that. So, and then there are companies like Prism Johnson and all. They fall under the category of corporate or industry, right? So these are the 3 categories under which the companies will come for finance students. Okay, normally again depend on which kind of company is coming. The
kind of thought process is according to that. Okay. Sales and marketing. One particular thing which I will eventually ask to everyone is that people who are from marketing stream, right? They, again, there is a confusion that they believe that we'll get a job in marketing. Okay, but marketing is definitely a little bit different from sales. And again, we have to little bit discuss about that. Okay, so what exactly, what are the profiles which are offered in sales and what are the profiles which are offered in marketing? So that we'll discuss. People who are from e-commerce, right? Normally the selection processes are quite similar, but here in this case, a primary focus is there on logistic, warehousing and procurement, right? You all know how e-commerce companies works. आप अगर Flipkart से order करते हो, right? So either Flipkart has their own warehouse or they get it from some other shopkeeper, right? If they're their own warehouse, okay, then it will involve logistics also, warehousing also, and procurement also. And this and a deeper understanding of this particular stuff is required for e-commerce students. Those who are in hospital administration, again, like this is a very, very specialized area. I worked in Apollo hospitals for 3 years. And I must tell you that this is a very critical area, and administration is something very complex. I'll share you one incident also. You all remember November 2016, right? When this demonetization happened. Okay. Now, after demonetization, what happened? People, the companies, the government has told everyone that they cannot accept rupee, 500 rupees and 1000 rupee note, right? So if a customer is coming to the hospital, okay, should we take that money from him or not? Okay, he is in a serious condition, और वो अगर आपको 500,000 के नोट दे रहा है, so will you accept it or not? Okay, ऐसे बहुत सारी situations आती है, right? So hospital administration is again a very very important function and very much required also. Okay, we have seen that in the COVID times also, so we'll talk about that as well. Right, because we have a time constraint, so I'm just touching on few things and getting into details about certain things where you have to focus more upon. Okay. Now, selection process will start with your shortlisting, right? Resume and video resume short. Sometimes it is they ask for video resume also. Generally, it is resume. Okay, so as I mentioned, that will through your this thing. I mean, you will get the resume format, okay, and we'll send. So that will be provided by your club to you. Okay, we'll send it to them. So first, it will start with the resume shortlisting. Now you have multiple questions related to that, whether I will be shortlisted or not. That is the primary question everybody asks, and they have this thing in their mind that मैंने तो 12th में 55% है. और 55% तो मेरा shortlisting होगा या नहीं होगा, right? I am from engineering background and now I am doing MBA, so मेरा shortlisting होगा नहीं होगा, right? And then there are questions which are related to whether I have done internship, I have done online internship, so whether I will be shortlisted or not. ऐसे बहुत सारे questions आपके हो सकते हैं. So देखो shortlisting के ऊपर I am not talking too much because हर कंपनी का generally criteria अलग अलग होता है, ठीक है? So इसमें हम लोग एक generalized answer नहीं दे सकते हैं कि ये कंपनी particularly इन students को hire करेगी, right? For example, certain companies have criteria of 60% throughout. 60% throughout means 10th, 12th, graduation, complete at every stage. It has to be 60%. But not for all companies. ये भी आपको याद रखना है. तो ऐसा नहीं कि आपके 60 से कम है तो आप disappoint हो गए. Are you getting my point? So similarly, there are some companies who they prefer or they have this strict criteria that they will take people who are from commerce background. For example, Deloitte USA. Deloitte taxation की जो profile है, Deloitte taxation USA, they basically hire for students who have been who have commerce background. Okay, so engineering background से जो है उन लोगों के लिए chance नहीं है क्या? So
हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया है, राइट? डेलॉइट दो प्रोफाइल्स के लिए आई थी लास्ट टाइम, वन फॉर टैक्स, वन फॉर नॉलेज मैनेजमेंट. सो फॉर नॉलेज मैनेजमेंट दे वर हायरिंग even from HR, marketing and others also, right, who have non-commerce background. Okay, so इसलिए थोड़ा थोड़ा वेरी करता है. इसलिए आप लोगों के वो जो क्वेश्चंस है कि लाइक whether I will get shortlisted for this company or not. Okay, I think this is not the right forum for asking those questions. Okay, those questions you can ask as and when the company will come, and it really doesn't matter too much because अब 10th और 12th के मार्क्स तो अब हम बदल नहीं सकते, राइट? सो जो है उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. So what you can do, okay, things which we can change right now. I think the focus should be entirely on those things. जो चीजें हो चुकी है उसके ऊपर अब फोकस करके कोई मतलब नहीं है, right? What you can do is the test, right? Written test. Okay, so these are the different kind of tests that you will face. Okay, so believe me, this is the first stage. Okay, and you have to really prepare it well. Okay, now how many type of written tests are there? Watson test, personality test, psychometric test, aptitude test, English test, Excel, accounting test, essay writing, and maybe few more. Okay, but these are the broad categories. So this is generally the first stage. Maximum companies does conduct test. Okay, so आप लोगों को इसके लिए prepare करना है. और the one thing, जैसे मैंने आपको बोला है कि you will have at least 8 to 10 things in your diary after this session, and so this is the first thing that you should write, that I have to again brush up my basics about the aptitude test. Okay, aptitude बहुत सारी companies organize करती हैं. Okay, so the toughness level is not as tough as CAT or something like that. जो आप MBA एंट्रेंस के टाइम पे फेस करते हो, ओके, नॉर्मली वो ही उसका लेवल होता है, लेकिन आप लोगों को वो ब्रश अप करना रहेंगे बिकॉज देयर हैज बीन सम टाइम सिंस यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम्स, सो उसको ब्रश अप करिए. उसके अलावा एप्टीट्यूड के टेस्ट के अलावा देयर आर सम डिफरेंट टेस्ट आल्सो. ओके, सो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे. सेकंड राउंड इज ग्रुप डिस्कशन. ओके, अगेन जरूरी नहीं है कि हर कंपनी GDs भी ऑर्गेनाइज कराएंगी, केस स्टडीज भी ऑर्गेनाइज कराएंगी. सम कंपनीज डज दैट. Last time it was mostly online. Okay, now this year hopefully, okay, if everything goes fine, it should be offline. Okay, but whichever way, right, अगर offline भी हुआ या online हुआ, it doesn't matter. दोनों ही केस में ग्रुप डिस्कशंस ऑर्गेनाइज हुए थे. ठीक है, so उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. Again, you must have faced those in your entrance, but again the thing is that it will be slightly different in this particular campus recruitment process. Third one will be technical interview. Technical interview will be purely based on the profile. Okay, for example, if you are going for Deloitte USI, the questions will be mostly on accounting and taxation. Okay, we'll discuss some questions also. We'll discuss in today's session some actual questions, and I will take your answers as well. Then there are sales. If you're talking about sales and marketing, again, then the marketing strategies. If you're talking about HR, then the questions on the behavioral aspects. If you're talking about e-commerce, again, then there will be questions depending on supply chain management. So her profile ke accordingly, you will find that the questions are framed in the technical round. So it will be purely based on the profile that you're facing. HR interview. HR interview is more of you all know that HR interview more about behavioral aspect, personalities, right? For example, one question that somebody has done 11th and 12th in biology, right? उन्होंने biology लिया 11th 12th में. 12th के बाद उनका मन बदल गया, right? फिर उन्होंने सोचा कि अब हम BCom करते हैं, right? उनको commerce करने का मन हुआ. फिर commerce करने के बाद उनका मन हुआ कि अब हम MBA करते हैं, right? MBA उनका मन हुआ कि हम लोग marketing में करते हैं, right? और marketing में करने के बाद फिर उनका ये हुआ कि अब हमको जॉब करनी है, so we will take a job maybe in an IT company. Okay, so like from biology to commerce, commerce to marketing, and commerce marketing to IT company, right? So then HR will ask you that what is the rationale about all this, right? So they will ask you questions. So ये questions होते हैं आपकी thought process, आपके long term plans और आपकी thought clarity को लेकर, right? So this is covered in HR round. And then there will be sometimes it is a final round, which is more of judging your confidence and judging your communication skills.
कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, राइट? व्हाट आर द कंपनीज व्हिच हैव पार्टिसिपेटेड? So this we are seeing from last many years that finance stream like company like D Shop, okay, which is called as RCCM. They come for profile of hedge funds, right? Back office. Now most of the students which they make mistake is they just go by the company name. Okay, अगर आप किसी से भी पूछोगे कि आप कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो बता देंगे आपको कि लाइक हम लोग डेलॉइट में जा रहे हैं, आरसीसीएम में जा रहे हैं, या फिर आईटीसी में जा रहे हैं, राइट? बट बहुत ही कम स्टूडेंट्स ही आपको बता पाएंगे कि हम किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। ओके, और ये आई थिंक आपको नोट करना चाहिए दैट व्हेनेवर यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोफाइल। ओके, रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी वेल। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, उसी से आपको क्लैरिटी आएगी कि इंटरव्यूअर्स का फोकस कहाँ रहेगा, ठीक है? सो एज आई मेंशन्ड दैट द आरसीसीएम विल कम फॉर हेज फंड्स, राइट? Hedge fund back office. Now what is anybody who can talk about hedge funds? What are hedge funds? किसी को अंडरस्टैंडिंग है hedge funds की? All right, no problem. So that was the point which I was trying to make. You all know that RCCM is one such company which offers the highest package. जितने भी फाइनेंस के स्टूडेंट्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि आपका जो सबसे बड़ा पर्पस है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूं, उनका ये पर्पस रहता है कि हमें प्लेसमेंट्स लेने। तो द नेचुरल क्वेश्चन कम्स कि सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी ऑफर करती है या कौन सी प्रोफाइल ऐसी है जो ऑफर करती है। सो ये अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि लाइक आरसीसीएम इज द वन सच कंपनी, ऑल्दो उसमें ओपनिंग्स कम होती है, बट इन ये जनरली हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है। तो नेचुरल क्वेश्चन कम्स कि वो किस प्रोफाइल के लिए आती है। ओके, एंड देन यू शुड स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट थिंग एंड उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हाउ योर थॉट प्रोसेस शुड स्टार्ट नाउ दिस इज द हाई टाइम, ऑल्दो अभी 3-4 महीने हो आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, बट दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स। व्हाट इज द प्रोसेस? रिटन टेस्ट. Okay, now in the written test, what all they cover about stock markets, hedge funds, derivatives, little bit of general knowledge, English and reasonings, right? Then sometimes they do conduct group discussion also, not always, technical round and final round, right? So this is their this thing. Second company which normally students are very keen about is Deloitte. Okay, Deloitte के लिए काफी students तैयार होते हैं, right? कि अगर आप प्रोसेस देखते हो, राइट, उसमें क्या था, वर्ड्स एंड टेस्ट, उसके बारे में बात भी करेंगे, और इफ द टाइम परमिट्स आई विल शो यू सम द प्रैक्टिकल दिस थिंग्स सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि ओके हाउ दिस वर्ड्स एंड टेस्ट गेट्स ऑर्गेनाइज्ड. नाउ व्हाट this profile is all about? This profile is all about US taxation. Okay, so again, like you should read, there are so many people from your colleges who are placed in the Deloitte USA. The right thing is like we're talking to them that what exactly they do, okay, what is their profile, what are the requirements of the job, and then you should start working upon it. That is a simple step that you can follow. They do conduct Version test, then they conduct Excel test, okay, MS Excel, then they conduct BPT test. BPT is basically business proficiency test, in which they check your basics about accounting, finance and taxation, little bit about costing also. Then again a round of 2 or 3 rounds of interviews, right? So this is basically a broad process. S&P Global data researcher, again online test, GD, Excel and technical interviews. Okay, so if we talk about marketing people, companies like Colgate or Asian Paints, what are the process? Online, if like last time it happened online, so English, maths and LR. Okay, so आप देखोगे फाइनेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ राउंड्स कंडक्ट करते हैं रिटन टेस्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंस के स्टूडेंट्स के केस में एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता ही है, बहुत सारी कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट कराती है, उसके अलावा एक्सेल टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, बीपीटी भी प्रिपेयर करना है और वर्सन टेस्ट प्रिपेयर करना है। ये तीनों टेस्ट अलग अलग टाइप से रहते हैं। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, एचआर, ई कॉमर्स और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों के केस में
maximum it is aptitude test and it is psychometric and personality test, right? So ऐसे technical questions नहीं आते हैं उसके अंदर, it is more of how you react in any situation. So हम लोग कुछ examples लेंगे, उससे आपको और clarity आएगी. For example, Vivo participated once, okay, और उसने they have organized situational cum psychometric test, GD, written test, HR and finally technical round. Okay, so अगर हम इसका पूरा crux निकालते हैं, right, and same goes for HR also, Ultratech, Yash Technologies, right, GDPI and aptitude test. So इस पूरे discussion का अगर हम crux निकालते हैं तो crux ये है basically the first thing is that you should again start brushing up your basics about maths, reasoning and English. Okay, ये वापस जो आप लोगों ने preparation करी थी पहले, okay, उसी preparations को अब आप लोगों को वापस brush up करना रहेगा, right? That is one thing. Second is जो नए टेस्ट होते हैं, नए टेस्ट जो अभी तक आपने फेस नहीं करे हैं, फॉर एग्जांपल सिचुएशनल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, वर्सन टेस्ट, एक्सेल टेस्ट, बीपीटी टेस्ट, राइट? ये नए टेस्ट के बारे में समझ के इसके ऊपर प्रिपरेशन स्टार्ट करना. आप कहीं से भी आपका आप कितने भी स्कॉलर हो, राइट, लाइक आपकी अगर फर्स्ट रैंक भी है, ओके, कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता है, राइट? कंपनीज को तो वो लोग चाहिए जो टेस्ट क्लियर कर सके. आपने बहुत अच्छी इंटर्नशिप करी है, आप आपकी कॉलेज में टॉपर हो, आप आपकी यहाँ पे जो कमिटीज हैं उसके हेड हो, ये सब चीजें एड ऑन से, राइट? तो फंडामेंटल पॉइंट ये है कि आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हो क्या. अगर टेस्ट क्लियर करा आपने तो यस यू आर मोस्ट वेलकम, और नहीं किया तो कोई बात नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. All right, so कुछ quickly हम लोग questions लेते हैं. Okay, it will give you a better idea about these tests, right? So let's start with the first question, and I will request all of you to quickly solve these questions so that we can cover many things, right? We have limited time, so जितना ज़्यादा cover कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा, right? So quickly, I would expect good answers. Fantastic. Okay, so from Amy Malik, fantastic. Yes, you're right. The answer for first question is 75%. Okay, and I hope most of you must have seen this kind of questions. All right, the second question, this is a bit tricky one. Okay, this is related to the pumps and the water leak, right? The questions that you have read regarding that, these are the if we turn on two tap at the same time, how much time will it take to fill up the tank? Those kind of questions. Okay, so this is there is a tweak in this one. This talks about the leakage, right? So if there is a leakage, how much time will it take? Okay, the answer is D. Fantastic. Okay, who has given this? Love Gemini. Fantastic, very good answer. Okay, both of you are right. Okay, and this is the time. Okay, within a minute. Okay, normally आपको ऐसा ही time मिलेगा. 30 questions 30 minutes, 50 questions 50 minutes. Generally ये time रहता है. So on an average आपको 1 minute मिलता है. ठीक है ना? तो कोशिश करें इन बेसिक्स को वापस से ब्रश अप करने के लिए. ठीक है? So अभी सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं, because we just wanted to cover up that what are the topics or what are the things that you need to again revise. Okay, reasoning की अगर बात करते हैं, right, if you are able to see this one, yeah, so what is the answer for this one? This is a question for reasonings. Answer is a fantastic one. Okay, very good. Okay, so these kind of questions you will find that you again मैं आप लोगों के जो पुराने थॉट्स से पुरानी मेमोरीज हैं उनको टच कर रहा हूँ. Basically that this is related to Venn diagrams. Which one will replace the question mark?
Yes. $622, Parag Jain. Very good, Parag. Okay, 622 is the right answer. Okay, so this is basically the mid number is basically the difference of the other two numbers. Okay. All right. So ये सब questions आप MBA entrance में face कर चुके हो. इन्हीं questions को अब आपको revise करना है. Aptitude test, mathematics के अंदर like all these kind of topics. You can take a screenshot of this one. Analytical reasoning, statement of arguments, cause and effect relationship, blood relationship test. Blood relationship के questions Deloitte में I remember उसमें काफी पूछे गए थे. Non-verbal reasonings, direction and distance related test, linear arrangement, sequencing, number series analogy. So all those things, right? We can't skip anything. Similarly, mathematics की अगर बात करते हैं तो जो topics आपने cover करे हैं, probability, profit and loss, averages, time, speed, distance, permutation, combination. So this is basically all those topics that you have seen already during your MBA entrance, right? Some companies do talk about GK test, but I personally believe with GK तो ऐसा है कि like you cannot cover each and everything, but you should start tracking top 10 news. Generally, current awareness related, current affairs related ज़्यादा चीजें आती हैं. So that you can certainly cover up if you track top 10 news, and this will help you in group discussions also. Now, specifically talking about Versant test, right? Versant test is an important one. Okay, अगर आप Versant test clear करते हो, so आपका Deloitte में selection का chances आप समझें कि like it will be very high. Okay, very high. You can again speak with your seniors about how many appeared and then how many got selected out of this, and out of those who cleared Versant test, how many got selected in final interviews. So you will find that कि जिन्होंने Versant clear कर लिया, right? उन्होंने बहुत बड़ी जंग तो उसी टाइम जीत ली थी. ठीक है. Now Versant test, what exactly is Versant test? तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फाइनेंस के स्टूडेंट्स डेलोइट टारगेट करते हैं. तो देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि बेसिकली प्रोफाइल क्या है. प्रोफाइल ये है डेलोइट यूएसआई. बेसिकली इट इज दीस पीपल वर्क फॉर टैक्सेशन प्रोफाइल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो एक ऑफिस जो उनका यूनाइटेड स्टेट्स में है और जो क्लाइंट्स उनके यूनाइटेड स्टेट्स में है, राइट, उस टीम को आप इंडिया से सपोर्ट करते हो. दैट इज द रोल. ओके, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, जिस टीम से आप बात करोगे वो कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? हिंदी में तो बात नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, राइट. वो लोग ऑब्वियसली उनका या तो यूके इंग्लिश एक्सेंट होगा या अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट होगा. सो ये लोग वर्सन टेस्ट के थ्रू ये जज कर लेते हैं कि आपको वो पर्टिकुलर इंग्लिश समझ आती है या नहीं आती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका सिंपल मतलब ये है कि लाइक आप मूवीज देखते हो कई बार, इंग्लिश मूवीज, ठीक है. सो इंग्लिश मूवीज में आपको कैप्शंस ऑन करने होते हैं, राइट, सबटाइटल्स आप ऑन करते हो, तब हमको समझ आता है क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू दिस थिंग. ओके, सो उस तरह से ही थोड़ा समझ लो. नॉट एज डिफिकल्ट. मूवीज में तो बहुत डिफिकल्ट होता है बट ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल इट्स अ डिफिकल्ट राउंड. मैं आप अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं एक दो स्टेटमेंट्स आपको सुनाऊंगा जो रियल टेस्ट में आए थे और आप लोग उसको सुन के समझो कि आप उसको समझ पा रहे हो नहीं. अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, इट्स गुड. इफ यू आर नॉट, देन यू शुड वर्क अपॉन इट. Are you getting my point? Version test is such an important test. Again, same thing. आपके कोई भी क्वालिफिकेशन हो वो मैटर नहीं करते हैं. अगर आप वर्सेंट क्लियर कर रहे हो दैट इज वेल एंड गुड. नहीं क्लियर कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच, राइट. सो वर्सेंट टेस्ट इज दैट इंपॉर्टेंट. इन दिस वन देयर आर 5 डिफरेंट सेक्शन. वन इज रीडिंग. आपको स्टेटमेंट रीड करने हैं, रिपीट करने हैं. रिपीटिंग इज डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड देन यू हैव टू रिपीट इट. ओके, then answering short questions, sentence building and story retelling, right. इस तरह से 5 rounds होते हैं. we'll see if we can play one round in this one. Yes, please ask your question. So how can we prepare for Version test? You have to keep on practicing. I will show you one or two this thing. I'll
So if you are able to understand them and you can repeat it well, it is good. But if it is not, then you have to practice it a lot. Okay, or practice करने के लिए, yes, there are definitely various ways. On YouTube also you will find a lot of exercises related to percent. Okay, which companies hires MBA rural development students directly off campus? Okay, I'll speak about this one. Okay, so let's complete this flow and then we'll talk about it. All right, so yeah, ये important point. The Watson test is very important, right? और भी किसी का कोई question हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं आप. We can spend 1 or 2 minutes on this one. All right. Excel test, right? Excel is again important thing. Okay, आप लोग Excel, you may be knowing Excel, right? Little bit, but you should start preparing about it. इसके दो फायदे हैं. पहले तो जैसे कि Deloitte में एक Excel test होता है, उसमें आपको हेल्प करेगा. और भी कंपनीज हैं जो Excel को कवर करती हैं. और second is obviously in your job. Okay, out of 10-12 hours, whatever you are spending on your job, you will spend 8 to 10 hours on the Excel only, right? So Excel is an important tool. Okay, so you should get a good understanding about Excel, right? So उसके बारे में आप तैयारी करें. Para writing and essay writing, not so difficult. Okay, इसमें से कुछ tricky नहीं है, but yeah, it is more of how you express, okay, and how much you know. Okay, दोनों बातें हैं, like you should have a good knowledge also and your good presentation skills. So some companies does conduct this essay writing. Not talking about people who are from marketing, right? Marketing stream से जो students हैं, ठीक है, उनके बारे sometimes they do conduct situational test. Okay, and same goes for HR also. HR stream के लिए भी होता है कि they conduct situational test. How will you react to any particular situation? Okay, for example, this particular one. When apologizing to a customer, what should the representative avoid? Right? What is the answer? B. Yeah, B is the right answer. Good one. Okay, yes, almost all of you trying to sell additional product. जब आप apologize कर रहे हो customer को, so you should avoid selling additional products. Right? These are situational tests. Now, is there anything, any guide for situational tests? No, there are certain traits. Okay, which you should remember. Okay, desired traits. Right? For example, autonomy, emotional management, rule acceptance. Okay. So इसकी कोई ऐसी guidelines नहीं है, but it is like how you generally react. What is the most reasonable this thing? So you should practice again situational test. बहुत सारी companies, just for example, I told you about Vivo. Vivo has conducted situational test. So आप एक ऐसे particular case में कैसे react करेंगे, क्या suggestion देंगे? Okay. So in that case, these tests are conducted और इसके अंदर right and wrong answers होते हैं. Okay. ये याद रखना है आपको. दो टाइप के टेस्ट होते हैं. एक होता है जिसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है. आप से पूछा जाता है कि आप कॉलेज जाते हो रोज और कॉलेज में व्हेन यू हैव टू टेक अप द स्टेयर्स, राइट, तो आप स्टेयर्स एक एक करके लेते हो या आप दो स्टेयर्स एक साथ लेते हो, राइट. नाउ देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग हियर. ओके, इट इज अप टू यू, राइट. आप एक स्टेप ले रहे हो, दो स्टेप ले रहे हो. They are called as personality tests, psychometric tests, but this is situational test. Situational test mein there are right and wrong answers, right? So yahan pe you should be very careful. And again, like if you know the profile, then you can answer those questions according to that profile also. Yeah. Talking about e-commerce and hospital administration, most of the tests are conducted on similar lines. जो अभी तक हमने discussions किए हैं. खास तौर पे आप लोगों को एप्टीट्यूड के ऊपर काफी काम करना है, राइट. एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली कंडक्ट किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो आपसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि लाइक यू शुड नो अबाउट
that the each and every point about how many type of specialization are there in hospitals. Similarly, e-commerce companies भी ऐसा expect नहीं कर रही हैं, ठीक है? तो ये आपसे एप्टीट्यूड के ऊपर ज्यादा फोकस करने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दैट यू शुड बी गुड इन एप्टीट्यूड दिस थिंग, राइट? सो टेस्ट में अभी तक इज एवरीवन विथ मी? यस, आई हैव टू चेक ऑन एंड ऑफ, संडे है आज, राइट? एवरीबॉडी इज इन एंजॉयमेंट मूड, तो अभी तक एवरीबॉडी इज विथ मी और नॉट, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट एन आवर, राइट? सो आई होप आर यू everybody is with me. If you can just tell me yes or something like that. Yes, so sir. Far, anybody has any questions related to written test? All right, thank you very much. Okay, after interviews, after written test, normally GD comes, but हम लोग पहले interviews के बारे में बात करेंगे, फिर group discussion के बारे में बात करेंगे, right? So इंटरव्यूज के बारे में सेकंड राउंड, 3 राउंड है टोटल, रिटन, इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन, राइट? सो सीक्वेंस वुड बी फर्स्ट रिटन, देन जीडी एंड देन पीआई, बट यहाँ पर हम लोग पहले इंटरव्यू डिस्कस कर रहे हैं. नाउ इंटरव्यूज इज बेस्ड ऑन 4 पार्ट्स: इंटर्नशिप बेस्ड क्वेश्चंस, प्रोफाइल रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड सीवी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? ये 4 तरह के क्वेश्चंस आप लोग फेस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है? कंटेक्स्ट इज बेसिकली, देखो आप लोग फ्रेशर्स हो और somebody who is from industry, right? They have spent almost 5-10 years, 15 years in industry, जो भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब दोनों के बीच में जो गैप आता है, राइट, वो गैप आता है थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज का, ठीक है? आफ्टर स्पेंडिंग 10 to 15 years in industry, interviewer's knowledge is mostly related to that industry. अगर मैं बैंकिंग में हूँ तो मुझे मेरा नॉलेज जो बैंकिंग रिलेटेड ज्यादा हो जाएगा, टेलीकॉम में हूँ तो टेलीकॉम रिलेटेड ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट टू प्रैक्टिकल नो हाउ, उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं. अब आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, आपने पढ़े हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स, राइट? तो इस पिक्चर में आप देखोगे तो यू आर रीडिंग 30-40 सब्जेक्ट्स, राइट? यू आर रीडिंग economics, you are reading statistics, you are reading HR, marketing, you are reading everything. But interviewer को क्या चाहिए? Interviewer को एक topic चाहिए which is related to their profile, right? So ये जो gap है ये आपको bridge करना है, इसको समझना भी है, right? We have to change ourselves according to interviewer's requirement, not the other way around. Interviewer अपने आप को change नहीं करेंगे. आपको समझना है कि अच्छा मुझे Deloitte USI में जाना है, मतलब मुझे टैक्स पढ़कर जाना है. मुझे अगर वीवो में जाना है तो मुझे टेलीकॉम पढ़ के जाना है. मुझे अगर किसी हॉस्पिटल में जाना है तो मुझे हॉस्पिटल के बिजनेस मॉडल्स पढ़ के जाना है. मुझे अगर फ्लिपकार्ट में जाना है एज ए ई-कॉमर्स दिस थिंग, मुझे सप्लाई चेन के बारे में पढ़कर जाना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपको इंटरव्यूअर की नीड के अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज करनी है, राइट? और अगर आपने ये चीज समझ ली, राइट, तो फिर योर फ्रीक्वेंसी विल मैच टू द इंटरव्यूअर्स फ्रीक्वेंसी, राइट? फिर आप दोनों सेम लाइंस पर आ जाओगे, एंड देन द सिलेक्शन हैपेंस, देन द मैजिक हैपेंस, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, तो अभी कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं क्लास में और आप लोग के आंसर्स भी लेते हैं. व्हाट आर द रेस्पेक्टिव आंसर्स फॉर दीज थिंग्स? रेज्यूमे, as we have already discussed about resume, एक फॉर्मेट विल शेयर. ओके, नाउ बहुत तरह के इसमें क्वेश्चंस होते हैं रेज्यूमे को लेकर, एंड बट इट्स अ सेशन इन इटसेल्फ, राइट? बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा रेज्यूमे को लेकर, तो अभी हम लोग उसको कवर नहीं कर रहे हैं. लेकिन पॉइंट इज दैट यू शुड प्रिपेयर अ रेज्यूमे इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, राइट? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रॉन्ग फॉर्मेटिंग, राइट? ये मैंने एग्जांपल लिया है इसके अंदर जो कि एक बहुत ही खराब फॉर्मेटिंग का एग्जांपल है, ठीक है? सो आप लोगों को गलती नहीं करनी है. सो या तो आपके पास अगर बहुत अच्छा फॉर्मेट हो ऑलरेडी उसको यूज करें, अदरवाइज यू कैन यूज दैट, ठीक है? एंड देन देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस. शुड आई पेस्ट माय फोटोग्राफ और नॉट? व्हाट शुड आई राइट? हाउ शुड आई राइट? देयर आर क्वेश्चंस, बट अगेन दैट्स अ डिफरेंट सेशन ऑल टुगेदर. Future, if there will be another sessions, then we can cover up that. Now ये सबसे इम्पोर्टेंट
सेशन है, मतलब अब हम जो बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन। तो अभी तक आप जितना फोकस कर रहे थे उससे आई थिंक आई वुड सीक योर डबल अटेंशन, because these are the technical questions, okay, and you should try to answer these questions to the best of your understanding, right? So for example, tax and accounting, okay, so first मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस के स्टूडेंट्स से, okay, जो लोग फाइनेंस स्ट्रीम जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। So questions कैसे आ रहे हैं? What is the current tax slab for individuals taxpayers in India, right? Tax slabs, ये क्यों कहाँ आएगा क्वेश्चन? ये प्रोबेबली आपको डेलॉइट के अंदर आ सकता है, क्योंकि डेलॉइट टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए आती है, ठीक है। सो आप अगर क्लास में आप जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, you should focus on taxation if you are specifically targeting to Deloitte. And that taxation means direct taxation, not the indirect taxation. How much is corporate tax in India? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, and you can give a quick answer of that. How much is the corporate tax? एक कंपनी को इंडिया में कितना टैक्स देना होता है? Any quick answer? %25%. 25%. All right, good answer. 25%. Okay. All right. So देखो 25% is उन कंपनीज के लिए 21. 21, okay, 22. देखो 25% सभी कंपनीज के लिए नहीं है, ठीक है। सो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हो तो 25 है, अदरवाइज 30% है। और देयर इज अनदर सेट ऑफ कंपनीज जिनके ऊपर 17% एप्लीकेबल है, राइट? सो दैट इज वन थिंग व्हिच you should remember. TDS, what is TDS? On the basis of turnover, yes, very good. इसके बेसिस पर डिसाइड होता है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, फैंटास्टिक, राइट? TDS is basically tax deduction at source. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? डेफर्ड टैक्स क्या है, राइट? ये सब टैक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अगेन पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल, राइट? नेगेटिव और पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, विच वन इज बेटर? ये सब इंटरव्यू, ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, क्या होता है वर्किंग कैपिटल? एनीवन? हाउ डू यू कंप्यूट वर्किंग कैपिटल? So working capital is the current. It's basically current asset minus current liability. So what's the money required in day-to-day operation of the business? Very good, yeah. So basically, current assets less current liabilities. Fantastic, Vinay. Thank you. Okay, now this is then after that they will start cross questioning, right? Do you think that company can do well with negative working capital? पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है तो is it okay or is it not okay? And then again, like, they will check your confidence, then they will check your concepts, they will get into details of that, but again, like, we are not getting into details as of now. जर्नल एंट्रीज, राइट? जो लोग कई मैंने टेस्ट देखे हैं जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज पूछी गई है, राइट? सो जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी आती है जर्नल एंट्रीज में। अभी से ट्राई करो जर्नल एंट्रीज समझना, और यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट जर्नल एंट्रीज। फॉर एग्जांपल, if you have to charge depreciation, right? What is the journal entry for that? Depreciation account by debit to asset. Depreciation to asset. Any other answer? All right. So basically, it is depreciation to provision for depreciation, right? And then provision for depreciation will be deducted from the asset account. Okay. Now, but this is also kind of a right entry, not wrong. But जो लोग नॉन कॉमर्स साइट्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए खास तौर पर जर्नल एंट्रीज को भी रिवाइज करना जरूरी है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड? बेसिकली रीड, जब भी क्लासेस में आप लोगों किन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है आपको, राइट? आउट ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स, टैक्सेशन, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेशन, अकाउंटिंग,
financial management, some topics of financial management, especially ratio analysis, and the little bit of costing, right? ये 4 एरियाज हैं जिन पे आप फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चंस आप लोग फेस करेंगे। फाइनेंस की अगर बात करें तो फिर कंपनी टू कंपनी काफी वेरी करता है, राइट? अगर हम लोग इक्विटी रिसर्च कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशंस, डेरिवेटिव्स, कॉल एंड पुट ऑप्शंस, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, राइट? सो ये सब चीजें इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें से कुछ आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, कुछ आप आगे पढ़ेंगे, बट कैंपस के अंदर ये सब रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आरसीसीएम का बहुत ज्यादा फोकस होता है डेरिवेटिव, राइट? सो डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, hedging techniques, derivatives, types of options, option trading strategies. So ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है if you want to crack RCC. ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट? What are the, how do you compute cost of equity, right? Any quick answer? Those who are doing financial modeling, they can definitely answer it well. Financial modeling या वैल्यूएशन या इस टाइप से आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, यू कैन सर्टेनली आंसर दिस। और भी बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। यस, cost of equity is computed by dividing the dividend upon the market price of the share into 100. all right, good answer. But if the company is not giving any dividend, then क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है ना जो डिविडेंड पे नहीं कर पाती हैं। ओके, सो उन कंपनीज का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसा रहता है? In that case, we compute it by considering retained earnings. all right, okay, so basically good try. yes, आप बोलें भाविका। अनम्यूट करिए। all right, no problem. Basically in this case cost of equity will be in every case, in the sense that it is computed using CAPM model, right? Capital asset pricing model. okay, तो ये आप स्टार्टअप हो, एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, राइट? उस केस में यू विल यूज CAPM मॉडल to compute the cost of equity. This is the most accepted model across industry and across countries. right, so these are the areas where one has to focus. Finance में obviously बहुत technical questions कई बार पूछ लिए जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया RCCM में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। बाकी कंपनीज में अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं तो भी आप उस इंटरव्यूज को, उन रिटर्न टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। broad basic about stock market, what is future, what is forward, what is equity, right? What is beta, broad, what are the various type of risk. okay, so इस तरह से भी अगर आपकी क्लैरिटी है तो you can certainly clear those routes. all right, so clear है, I am sure आप लोगों को जो फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं उनको एक ब्रॉड क्लैरिटी आई है कि हमें 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है: डायरेक्ट टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लिटिल बिट ऑफ कॉस्टिंग, राइट? ये चारों हम लोगों को कैंपस के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, राइट? और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वो सबसे डीप सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उसमें रेशियो एनालिसिस है, कैपिटल बजटिंग है, उसमें एक टॉपिक आता है रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स। वो सबसे ज्यादा आपको कहीं ना कहीं परेशान भी करेगा और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, राइट? सो दैट इज वन थिंग व्हिच यू नीड टू फोकस। ठीक है, अब हम आते हैं सेल्स, जो लोग मार्केटिंग स्ट्रीम से हैं। ठीक है, मार्केटिंग से जो लोग हैं उनसे मेरा एक क्विक क्वेश्चन है, राइट? व्हाट इज सेल्स एंड हाउ डू यू डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? ओके, तो मैं एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो लोग मार्केटिंग से हैं। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट अगर एक सिम कार्ड है और उस सिम कार्ड की प्राइस हम डिसाइड कर रहे हैं 100 रुपीज, राइट? सो who decides this thing? It is decided by marketing team or it is decided by sales team?
I don't know whether we have students from marketing or not. All right, so I'm sure sales team. No, marketing, this pricing will be decided by marketing, right? So this is basically the 4 P's of marketing. Okay, 4 P's of marketing says that product, price, place and promotion. Okay, so that will be decided by this thing. So एक शॉर्ट में बात कर लेते हैं रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग. स्टूडेंट्स जो लोग मार्केटिंग से हैं, राइट, उनको लगता है कि हमें मार्केटिंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. लेकिन अगर आप पहली स्लाइड याद करोगे तो आपने देखा है कि एक कंपनी में मार्केटिंग में कंपैरेटिवली कम एम्प्लॉइज काम करते हैं, सेल्स में ज्यादा काम करते हैं, और इसीलिए सेल्स में ज्यादा ओपनिंग होती है. सो जितनी भी कंपनीज जनरली आती हैं फॉर हायरिंग कैंडिडेट्स, लार्ज एफएमसीजी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, जो भी कंपनीज ने पार्टिसिपेट, दे जनरली हायर फॉर सेल्स. अब आपका सवाल ये होगा कि हम पढ़ते तो मार्केटिंग है, तो सेल्स के अंदर तो आपको सेल्स भी पढ़ना पड़ेगा. Are you getting my point? Sales and marketing, these two are although interrelated functions, but कहीं ना कहीं दोनों में difference है और job requirement में भी differences आते हैं. ठीक है, so that you need to understand. Right, these are certain questions related to sales and marketing, but I believe there are not many students from marketing side, so I'm not getting into too much of details. You can take a snapshot. जो लोग भी sales या marketing से हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. HR स्पेशलाइजेशन. ओके, नाउ जैसा हमने एक स्लाइड में डिस्कशन किया था कि आपको इंटरव्यूअर की रिक्वायरमेंट समझनी है. ठीक है, सो इंटरव्यूअर विल नॉट अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरव्यूअर्स बैकग्राउंड एंड देयर साइकोलॉजी. So interviewer is basically thinking on the practical side. उनको सब कुछ practical answers चाहिए, practical thought process चाहिए. तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे फाइनेंस के केस में, राइट, बीटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो अभी जो इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आपको पता होगा कि लाइक रिलायंस का कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है. आपको ये पता होगा कि रिलायंस का बीटा कितना है. आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स का बीटा कितना है. ओके, नॉट फॉर ऑल कंपनीज, बट किसी एक कंपनी का. आप इक्विटी रिसर्च कंपनी के रोल के लिए जा रहे हो, राइट, तो देन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आल्सो, नॉट थियोरेटिकल. रियल लाइफ में इन चीजों का एप्लीकेशन कैसे होता है. ओके, ये एक्सपेक्टेशन वो लोग रखते हैं आपसे, और उसी के थ्रू आप इम्प्रेस कर सकते हो इंटरव्यूअर्स को. ये पॉइंट आप लोग समझिए कि हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिकल आंसर्स देकर ही इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, राइट. सो सेम गोज फॉर एचआर स्टूडेंट्स एज वेल. बेल कर्व मॉडल, राइट. एचआर से कोई स्टूडेंट्स हैं? आई थिंक काफी स्टूडेंट्स हैं एचआर से. सो बेल कर्व मॉडल, व्हाट इज दैट? एनीवन? What is a bell curve model? Yes, anyone? So basically, it's a model which helps to identify the top performers of the organization. Very good, yeah, fantastic. So देखो, बेसिकली बेल कर्व मॉडल हर कंपनी में यूज होता है, और ये एक नॉर्मल कर्व होता है. आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, एक होता है नॉर्मल कर्व, राइट. सो उसमें बेसिकली होता है कि इट इज अ बेल शेप्ड मॉडल. सो जो बेल शेप में क्या होता है, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, राइट, दे कम ऑन द टॉप, एंड देयर आर सपोज 5 लोग हैं टीम में, तो 5 में से 2 को आपको लो रैंकिंग देनी है, 2 को आपको मिड रैंकिंग देनी है, और 1 को टॉप रैंकिंग देनी है, राइट. तो बेल कर्व मॉडल एक अप्रेजल के काम में आता है. सभी लोगों का अप्रेजल होगा, आप जॉब ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो अप्रेजल्स मॉडल होते हैं वो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट. नाउ बेल कर्व मॉडल हर कंपनी में यूज होता है. ठीक है, तो हमको थियरी के अलावा इन चीजों को भी पढ़ना है, जिससे आप प्रैक्टिकल कुछ इंसाइट्स दे सकें.
एचआर के अगर हम लोग और बात करते हैं तो अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एचआर रिलेटेड हॉट न्यूज क्या चल रही है। इंडस्ट्री रिलेटेड हॉट न्यूज ये चल रही है कि जो एट्रिशन है राइट इन आईटी सेक्टर वो बहुत हाई है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, सारी कंपनीज परेशान है, इतने एम्प्लॉयज छोड़कर दूसरी कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आईटी में डिमांड बहुत है। तो सभी एचआर मैनेजर्स के लिए अभी एक ही प्रॉब्लम है, वो है रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, राइट। So this this is what one has to focus upon, that what is happening in the industry. That is something which is very important, right? Second is, if you are doing a HR specialization, you should focus also on little bit of the compliances part, right? Compliances are related to provident fund. What is provident fund, right? What is ESIC, right? These are certain compliances which as an HR manager one has to follow, right? So जो company के HR heads होते हैं, right, उनके under में vertical आता है. Okay, so if you have some understanding about these things, this also helps you a lot. And then situational based questions, जैसा मैंने आपको एक example भी दिया था situational based questions का. If there is an employee conflict, if there is labor union conflict, how will you respond, right? If somebody is if somebody is very senior, right, and if they are not able to perform, then how will you how will you basically inform them that their performance is not up to mark or something like that. इस तरह से काफी क्वेश्चंस आप लोगों को सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. सो you should read about again the things which are happening in the industry. Okay, you can connect well with the interviewer if you read some theories, well accepted theories. Okay, then you can connect very well with the interviewers. Talking about e-commerce, there is again very high demand for e-commerce companies. Okay, India में अगर आप देखते हैं जो अगला सेक्टर है, okay, ऐसा बोलते हैं ना कि like everybody every large business house basically focus on the emerging sectors. So India में अभी कौन से emerging sectors हैं? अब आप बोलेंगे कि बैंकिंग, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल आर द इमर्जिंग सेक्टर्स. देखो, इमर्जिंग सेक्टर का मतलब ये है कि जहां पर द प्रोडक्ट इज नॉट रीच टू एवरीवन, दैट इज कॉल्ड एज इमर्जिंग सेक्टर. अभी लाइक 40% लोगों के पास ही स्मार्टफोन्स है, 50 मे बी अराउंड 50-55% पीपल हैव स्मार्टफोन्स, राइट. And out of those 55%, not everyone is using e-commerce, right? So there is a huge potential in e-commerce industry. Okay, अगर आप telecom companies की बात करोगे तो you will find that everyone has a phone in their hand, right? तो इसलिए telecom companies पहले 11 companies 12 companies हो गई थी. Okay, आज कितनी companies बची हैं? प्राइवेट में बात करें तो 3 कंपनीज, उसमें से भी 2 ही प्रॉपरली चल रही हैं, वन इज इन not so good condition, right? So ये हो गए सैचुरेटेड मार्केट्स जहां पर अब ग्रोथ के चांसेस नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल इन इंडिया 90% पीपल हैव फोन्स, राइट. तो ग्रोथ कहाँ बचा है इसके अंदर? सो ग्रोथ उन सेक्टर्स में होती है कि जो कि अनपेनेट्रेटेड मार्केट्स है, राइट. सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अब स्टार्ट हुआ है, बाय 2030 इट विल बी इन बूम. सो 10 years will be an electric vehicle story. Next 10 years will be e-commerce story, right? So e-commerce has, that's why, huge potential. That's why Tata is also entering into e-commerce. Reliance is also entering into e-commerce, right? They have big plans of e-commerce, these things. So again, you should read about simple questions, right? Simple. For example, if you are registering yourself as a seller on Flipkart, how much commission will they charge? आप अगर सेलर हो जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर करते हो, अमेजोन पे रजिस्टर करते हो, मीशो पे रजिस्टर करते हो, तो बेसिकली हाउ मच दे विल चार्ज. ओके, सिंपल क्वेश्चन है, राइट. सो यू शुड, आप थोड़ी उनकी वेबसाइट्स पर जाओगे, देखोगे, रीड करोगे, यू विल गेट इट. ठीक है. व्हाट इज जीरो इन्वेंट्री है, व्हाट जीरो इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है, जस्ट इन टाइम मॉडल, ये सब कौन से इन्वेंट्री के मॉडल्स हैं? क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज आपने देखा है लार्ज वेयर हाउसेस लेती हैं, उसमें बहुत सारे
प्रोडक्ट्स रहते हैं, सो उनको इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ती है. अगर ज्यादा इन्वेंट्री रहेगी तो कॉस्टिंग उनकी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए दे हैव टू मैनेज इट वेल. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि supply chain management is one such area where you should really focus upon. And you should read some case studies also about inventory management, large e-commerce companies and all, right? Hospital administration, quick questions, right? Multi-specialty hospital, क्या specialties होती हैं, IPD क्या होता है, OPD क्या होता है, average IPD days क्या होते हैं. हॉस्पिटल्स में मल्टीपल लाइसेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? लिफ्ट एंड इसके अलावा फार्मेसी का लाइसेंस अलग लगता है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लगता है, राइट? देन यू हैव अ लाइसेंस मेडिकल, you have to take some medical licenses. Okay, so there are close to 30-35 licenses, including everything, right? Pollution control board. So if you have to start a hospital, how many licenses are required, right? So this is a work of a hospital administration. Right, and then there are situational based questions. जैसे मैंने कोविड वाला आपको एक एग्जांपल दिया था, right? Those kind of questions. So the crux of the entire technical discussion is basically please understand the industry in which you are planning to appear and you are planning to give interviews, and prepare yourself according to that. Not only theoretical, but also understand that industry, read some practical aspects related to that particular industry. All right. So this is all technical questions. Okay. Now coming to the HR related questions. Okay, HR related questions. They are almost kind of similar questions what you face during your MBA entrance, that where you see yourself 5 years, 10 years down the line. But now the perspectives change, right? 5 years, 10 years down the line, strength, weakness. Pehle college was asking you this question, now companies are asking, right? So the answer would be more in terms of your job stability, right? Uske us taraf aapko zyada answer karna hai, your interest towards that job. Okay, how do you manage work pressure? Being a single child, how will you manage to work out of your hometown? Why we should hire you? And then there are a lot of questions like this. So these are like all behavioral kind of questions. So any questions so far, right? Regarding interviews, because again it is a very long topic to discuss, but quick questions. So anyone, then we can have it. So why should we hire you? Question: how should Why should we hire you is basically about these strengths, right? For example, if you are your strengths and your interest. So if your Deloitte is coming for USI, you should say that one, I am very much interested in taxation profile, and second is I am quite keen about this particular subject and I have scored well in taxation, or I have done some kind of internship in taxation, or I have done some kind of case studies related to taxation. So it is to do with your interest and your strengths. Okay, which companies hire for equity research also off campus? बहुत सारी कंपनीज हैं इक्विटी रिसर्च की, काफी कंपनीज हैं इंडिया में. ओके, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, right? बहुत सारी companies हैं. If you do a Google, you will get a long laundry list of that. What is the selection procedure of TCS? TCS basically conducted one अलग-अलग था. HR के लिए there was a written also, then there was GD also, and then there was interview. और I think एक किसी कंपनी के अंदर किसी कॉलेज में there was only written and interviews, right? No GD happened. MBA for rural development. रूरल डेवलपमेंट में बेसिकली देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो जैसे कि कई कंपनीज भी होती हैं जिनको CSR फंड्स इन्वेस्ट करना होता है. So they also do basically invest. They hire people who can do help them. Okay, so रूरल डेवलपमेंट में इस तरह से अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी काफी रहते हैं. Okay, so कंपनीज के जो स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं, राइट, इन दैट पर्टिकुलर केस. सो ये किसी भी कंपनी के अंदर हो सकता है, राइट? इसमें स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि ओनली हॉस्पिटल्स विल हायर यू, और ओनली NGOs विल हायर यू, और ओनली गवर्नमेंट कंपनीज विल हायर यू.
It could be any company who have a specific focus on rural development, right? For example, ITC has eChopal, right? So their entire focus is on rural, not exactly development, but rural markets, right? So they may also think of hiring people who have good understanding about the rural markets. और एक तरह से लाइक क्योंकि अर्बन मार्केट्स में मार्केट सैचुरेट होते चले जा रहे हैं, सो कंपनीज का फोकस अब धीरे धीरे रूरल मार्केट्स पर जा रहा है, सो उन जगहों पर आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज हो सकता है. Now some tips, right? How to prepare for interview in hospital administration. देखो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आई एम श्योर कि आपको कुछ प्रैक्टिकल न्यूएंसेस तो कवर करने रहेंगे, राइट? जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल्स आप लोगों को दिए थे इसमें इंटरव्यूज में, दैट स्पेशलिटीज एवरेज आईपीडी डेज. अब जैसे एवरेज आईपीडी डेज व्हाट इट मींस इज, अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, राइट, एक्स हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो कितने दिन में वो डिस्चार्ज हो रहा है. अगर वाई हॉस्पिटल में हो रहा है, कितने दिन में डिस्चार्ज हो रहा है, राइट? सो ऐसी कोई स्टडी अगर आप करते हो, ओके, एंड यू कैन प्रेजेंट दैट काइंड ऑफ केस स्टडी दैट इन दीज काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स, और if the person is suffering from this particular disease, it is taking so many days to come out of the hospital. So this is a very important study, and every hospital wants to know कि are we doing good or we are doing bad about our number of IPD days. So इस तरह की कुछ practical study अगर आप कर सकते हो तो that will be helpful, and it goes for other this thing as well. सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं about hospitals, but any particular thing. For example, if you have done a case study about what all things are required for an ambulance, right? Ambulance में कितनी चीजें required होती हैं, तो इस तरह से आप कोई भी एक केस स्टडी प्रिपेयर करेंगे, and if you can present it well to the interviewer, yes, that would be great. So let me finish this particular topic, और उसके बाद मैं आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस पर आता हूँ, राइट? एचआर इंटरव्यूज तक हमने बात कर ली थी. कुछ टिप्स ये है कि इंट्रोडक्शन, राइट? Introduction is the backbone of any interviews, right? So you have to prepare it very thorough, whether it is a telephonic conversation, whether it is an online conversation or face-to-face conversation. The first question is always introduce yourself, right? It has to be so impactful that interviewer does not have a single doubt in their mind that I have to take this candidate. हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको कहा है कि लाइक हम लोग पिछले 5 साल से ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं. बिलीव मी, मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू हो, जो अगर अच्छा इंट्रोडक्शन है, तो 70% आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? सो यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक दैट आई हैव टू प्रिपेयर अ फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन, ओके? और फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि प्लीज इंक्लूड सम काइंड ऑफ अचीवमेंट्स. आज तक जो भी आपने अचीव किया अपनी लाइफ में, ओके, उनको इंट्रोडक्शन में बताएं, राइट? हो सकता है आपने कोई रैंक स्कोर करी हो सकता है आपने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करा हो सकता हो आपकी यहाँ पर कमिटीज में आप अच्छा कर रहे हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, कोई सर्टिफाइड अचीवमेंट ना हो, लेकिन आपने यू आर अ फाइटर इन अ वे दैट आप बहुत ही स्मॉल टाउन से थे और आप एक बड़े टाउन में आ गए हो, ओके, एंड यू डिड नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू न्यू सर्कमस्टांसेस. ये भी एक अचीवमेंट है. So please talk about your achievements, okay, apart from the other stuff. So because again there is a time constraint, और कुछ चीजें और कवर करनी है, so मैं इसको शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ. Second thing is apart from introduction, before appearing for interviews, real interviews, please give mock interviews. Mock interviews आपको देना ही चाहिए. बिना mock interviews अगर आप जाओगे, it is very very challenging then. आप देखते हो मैच खेलने के पहले अगर नेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सेम गोज फॉर यू एज वेल, राइट? बिफोर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज, प्लीज गिव मॉक इंटरव्यूज. कहीं भी दे सकते हो, कहीं नहीं दे रहे हो अगर, तो दोस्तों के साथ ही मॉक इंटरव्यूज शेड्यूल करो,
एटलीस्ट कुछ तो आपकी स्पीकिंग हैबिट बनेगी। बिकॉज सिंपल क्वेश्चंस भी जब आते हैं, राइट, सिंपल क्वेश्चन आया कि आपने इंजीनियरिंग के बाद MBA क्यों करा, अगर आप मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए तो ये सिंपल क्वेश्चंस के कारण भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा मैं बहुत देखता हूँ, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट प्लीज गिव मॉक इंटरव्यूज एंड देन यू विल लर्न हाउ टू ड्राइव योर इंटरव्यू, ठीक है। तभी आप इंटरव्यू आपके हाथ में होगा, इंटरव्यूअर आपकी कमांड में होगा, एंड देन यू विल ड्राइव योर इंटरव्यू। अदरवाइज सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। आप देखते हो कई द सिचुएशन विल बिकम लाइक कि जैसे आप देखते हो ना, कई बार आपके फ्रेंड्स होते हैं who drive very fast, आप उनकी गाड़ी पर हो, राइट, दे आर ड्राइविंग लाइक एनीथिंग, ओके, और आप बस पीछे बैठ के प्रार्थना कर रहे हो कि लाइक somehow we will reach safely, right? So ये उस तरह का हो जाता है फिर, okay, if the interview is not in your hand, you should drive your interview, right? Then there are questions related to internships and all, okay, so हम लोग उसको फाइनल सेगमेंट में कवर कर लेते हैं। GDs, राइट, GDs के अंदर अगेन प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। टॉप 10 टॉपिक्स जो हैं, राइट, उनको रीड करें, और ये जो स्क्रीनशॉट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। These are certain things that troubles in group discussions, right? How to start, if someone has already spoken your point, then how you should react, how many entries I should take, is it required to raise voice, if someone has cut your point, what you should do, how to speak on an abstract topic, right? Should I take a stand during the group discussion? So GDs के अंदर बहुत तरह के questions आते हैं, and if you are already clear about कि मुझे इस particular situation somebody is shouting, right, now what I should do, तो ये point अगर आपको clear है, किसी ने मेरा point already बोल दिया है, अब मुझे क्या करना है, तो ऐसे आप thought पहले ही अगर आपको clear clarity है, then you will be able to clear the group discussion, otherwise problem होती है, right? तो इन questions के आपको अपने आप को answers देने। कुछ टॉपिक्स अगर आप देखते हैं तो कैसे को टॉपिक्स आए हैं अभी तक। फेसबुक वर्सेस लिंक्डइन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स, इज इंडिया रेडी फॉर कैशलेस इकोनॉमी, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जीरो, विच वन इज इम्पोर्टेंट, क्रिएटिविटी और नॉलेज, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, फ्री मेट्रो राइट्स फॉर वुमेन, इज इंडिया रेडी फॉर 5G, इशू इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। इनको अगर आप डिवाइड करते हो टॉपिक्स को, ठीक है, तो आप देखोगे 60% टॉपिक्स जो हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आप रेगुलरली न्यूज ट्रैक कर रहे हो, टॉप 10 न्यूज जैसा मैंने आपको कहा है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा 60%। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, काफी चांसेस हैं कि इस तरह का कोई टॉपिक आ सकता है, राइट। 60% of the topic will be related to current affairs, 30% will be related to general topics, right? General topics means टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है जॉब्स के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इस टाइप की जनरल टॉपिक्स। और 10% होते हैं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, लाइक जीरो, कलर्स के ऊपर रहता है, ब्लू वर्सेस ग्रीन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। बट द पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड रीड द टॉप 10 न्यूज, ओके। सो इन दोनों से ही आप इसको कवर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन देयर आर सम ट्रिक्स टू, और ट्रिक्स भी तभी आप तो समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसे, ठीक है। सो टॉप 10 न्यूज डाउनलोड करो, बहुत सारे हैं आजकल तो, इन शॉर्ट है, गूगल न्यूज है, बहुत तरह से आप इसको न्यूज को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ वन थिंग इज, नाउ द लास्ट थिंग, राइट, लास्ट थिंग इज बेसिकली सेल्फ क्लैरिटी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, अभी जो आपके क्वेश्चंस में देख रहा हूँ वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। why you choose MBA after engineering, what should be the answer, okay। तो ये सेल्फ क्लैरिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं, HR रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग उस मोड में आ जाते हैं। तो आई विल टेक लास्ट 5 मिनट्स, ठीक है, अनदर 5 मिनट्स में मैं इसको क्लोज कर दूंगा, और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, राइट, यू आर फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस। नाउ दिस इज अ थिंग व्हिच I tell to everyone, right? क्योंकि MBAs के बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को कांटेक्ट करते हैं, and they have this question that what should I do? Because there are certifications, there are internships, there are projects, there are preparations, then there are exams. So मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, right? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। So देखो, this is my personal opinion कि इंटरव्यूअर के थॉट से स्टार्ट करो। What interviewer wants? आपको प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट
आपको मिलेगा कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो कंपनी क्या चाह रही है वहां से स्टार्ट करो, राइट। सो एक एक करके देखो, आप अगर डेलोइट में जाना चाहते हो, डेलोइट में कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी चाह रही है कि आप वर्सन टेस्ट क्लियर कर दो। कंपनी को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से करी है, आपने प्रोजेक्ट कहाँ से करा है, आपने सर्टिफिकेट्स कितने करे हैं, उनको मतलब है आप वर्सन टेस्ट क्लियर करो। क्लियर है। आरसीसीएम में मुझे जाना है, आरसीसीएम क्या चाह रही है, आरसीसीएम चाह रही है आप रिटर्न टेस्ट क्लियर कर दो, इंटरव्यूज क्लियर कर दो, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको जब भी थॉट देना है, राइट, हाउ यू शुड गिव प्रायोरिटीज, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आने वाला है, काफी लोगों ने से आता है क्वेश्चन कि इंटर्नशिप कैसे करें, कहाँ से करें, कितना इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है। सो ये जो फॉन्ट साइजेस हैं उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ही इसका सीक्वेंशियल इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली कैंपस प्रिपरेशंस है अकॉर्डिंग टू मी। Reason I already told you, the company is expecting you to clear those tests, right? They are least bothered about कि आपने internship कहाँ से करी है, सर्टिफिकेट कहाँ से करें, ये सब चीजें एड ऑन करती है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा देती है, लेकिन जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, राइट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट उनके लिए उनके टेस्ट होते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस आता है इंटर्नशिप फ्रॉम कोर कंपनीज। कोर कंपनीज का मतलब ये है जैसे आपने बैंकिंग से करी है कोई इंटर्नशिप, आपने किसी कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट से करा है आपने इंटर्नशिप, तो इस ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कंपनीज अप्रिशिएट करती है अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपने सपोज कोई भी XYZ कंपनी से आपने कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है रिलेटेड टू योर फील्ड, दे विल अप्रिशिएट दिस फैक्ट। अगर आप मार्केटिंग से हो, आपने मार्केटिंग रिलेटेड कोई कंपनी में सपोज आपने एशियन पेंट्स में आपने इंटर्नशिप करी, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न टेस्ट नहीं देना है, रिटर्न तो देना ही है, लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने एशियन पेंट से इंटर्नशिप करी है, आपने किसी ICICI बैंक से इंटर्नशिप करी है, ठीक है, और आप क्रेडिट के रोल में जा रहे हो, फायदा मिलेगा आपको, राइट। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके रिटर्न टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, रिटर्न टेस्ट के बाद ये सब बातें आती हैं, ठीक है। सो इंटर्नशिप फ्रॉम कंपनीज सेकंड इंपॉर्टेंट है। फिर लाइव प्रोजेक्ट्स, अगर आपको इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है या आपके पास टाइम ही नहीं है इंटर्नशिप्स करने का, गो फॉर लाइव प्रोजेक्ट्स। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन को आप समझो, और रियल लाइफ अगर कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करती है या कहीं से भी आपको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने को मिलता है, मतलब कोई रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। सो उन सिचुएशंस पे आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल आज आपको पता चला है कि RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, राइट, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे मार्केट एकदम क्रैश कर गया है, स्टॉक मार्केट। सो उसके बारे में यू नीड टू लिटिल बिट स्टडी एंड देन यू विल फाइंड दैट दिस विल हेल्प यू। लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर आप यू कैन मेक स्पेसिफिक शॉर्ट प्रोजेक्ट्स। जैसे हॉस्पिटल के केस में मैंने आपको बताया था कि what is the requirement one in a hospital, how many licenses one should have, so इस तरीके का एक लाइव प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने ले ली किसी इंडस्ट्री की और उसके ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया, राइट। दिस इज एज गुड एज योर इंटर्नशिप। फोर्थ इज बेसिकली इंटर्नशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स। आजकल इंस्टीट्यूट्स भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज द फोर्थ वन। एंड लास्ट इज सर्टिफिकेशंस, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस व्हिच आई पर्टिकुलरली थिंक दैट अकॉर्डिंग टू मी, राइट, ये इंपॉर्टेंस रहता है, राइट। अब आप लोगों के इसमें कोई भी और क्वेश्चंस हो तो यस यू कैन कीप इन योर माइंड। हम लोग बस फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पर जा रहे हैं। ये सिचुएशन नहीं करनी है हमको कि सर्टिफिकेट्स, यू गैदर्ड सो मेनी सर्टिफिकेट्स, आप उसके बाद ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा सर्टिफिकेट रेज्यूम में दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ये भी नहीं होना चाहिए, राइट, ये भी बहुत होती है प्रॉब्लम। लेने के टाइम पे हम सब कुछ ले लेते हैं, सारे सर्टिफिकेट्स। मैंने देखा है फाइनेंस के स्टूडेंट्स से, जब मैंने कुछ स्टूडेंट्स के रेज्यूमे देखे थे, तो इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक्सेल, कई लोगों ने तो डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जो सर्टिफिकेट मिल सकता था सब ले लिए थे। और फाइनली अब कंफ्यूजन ये हो रहा था कि कौन से रखने, कौन से हटाने, राइट, क्योंकि जो आप रखोगे उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग लिख रहे हो और अगर आपको पता नहीं है कि वैल्यूएशन की कितनी टेक्निक्स होती हैं, राइट, सो ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। सो हमको लिमिटेड रखना है और जिसके ऊपर यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, राइट, दैट वी हैव टू कीप इट।
जॉब सिलेक्शन के टाइम पे ये स्लाइड काम आएगी आपकी, तो अभी तो आप इसका चाहो तो स्नैपशॉट एक ले सकते हो। एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट, राइट, स्टूडेंट्स यंग, आप लोग सब यंग क्राउड हो, राइट, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है, अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस होती है। जब मैं भी स्टार्ट करा था अपना करियर, आई हैव आल्सो वांटेड एवरीथिंग, starting from money to good profile to good company to job satisfaction to good location, everything is required, right? So but we have to manage this thing, but right now this discussion is not so much relevant, so I'm just skipping this. Right, so this is what I think that I wanted to cover, although बहुत सारी चीजें हमने बहुत फास्ट मोड में कवर करी हैं, but we had this time constraint, so हम लोग quickly questions ले लेते हैं so that we can specifically discuss about certain things. Okay, so आप लोग चाहें तो अनम्यूट भी करके भी पूछ सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। What if a student have some drop year due to some reason or the other, how to cover up for that? जनरली देखो, कवर अप एज सच कंपनीज पूछ लेती हैं, जिनके क्राइटेरियाज होते हैं वो पहले ही बता देती है कि लाइक वी वांट दिस मच ड्रॉप ईयर्स, राइट, 1 साल 2 साल जो भी उनका क्राइटेरिया होता है वो पहले ही बता देती हैं। अगर उनको कैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसका मतलब ये है कि दे विल एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ ड्रॉप ईयर्स, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आप इंटरव्यू रूम में चले गए हो, उसके बाद ये मान के चलो कि कंपनीज ने आपकी परसेंटेज भी एक्सेप्ट कर ली है, आपके ड्रॉप ईयर्स भी एक्सेप्ट कर लिए, सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, आपकी स्ट्रीम भी एक्सेप्ट कर ली है, राइट। सो ये सब प्रॉब्लम होती है बिफोर शॉर्टलिस्टिंग। तो बिफोर शॉर्टलिस्टिंग अगर कंपनी का क्राइटेरिया है ड्रॉप ईयर को नहीं अलाउ करने का, तो फिर वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, राइट। सो उसमें कवर अप करने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर इट इज दिस साइड और दैट साइड। Okay, then is there any difficulty in HR and marketing interview for rural development student? प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको HR या मार्केटिंग के रोल के लिए, आपको पढ़ाई थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। यू नीड टू गेट इनटू लिटिल बिट डिटेल्स अबाउट द HR रोल, मार्केटिंग रोल। इस कंपनी गिव्स प्रेफरेंस टू HR एंड मार्केटिंग स्टूडेंट और नॉट इफ आई एम रूरल डेवलपमेंट। देखो, कंपनीज का जैसा मैंने बताया कि कंपनीज अगर ओपन क्राइटेरिया लेकर आ रही है कि हमको ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको केवल वो उन्होंने सोचा है कि हम इंटरव्यू में जज करेंगे, तो बस अब आपका नॉलेज मैटर करता है, बाकी कुछ भी मैटर नहीं करता। इसके पहले आपने क्या स्पेशलाइजेशन किया है, क्या इंटर्नशिप करी है, क्या सर्टिफिकेशंस किए हैं, वो सब कुछ मैटर नहीं करेगा। वो मैटर करेगा कि इंटरव्यू में आप क्या बोल रहे हो, राइट। सो ये उन कंपनीज के लिए जो ऐसा कुछ पहले से क्राइटेरिया लेकर नहीं आती, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि देखो, प्रिपरेशन जॉब प्रोफाइल को लेके करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं कुछ चीजें आप इसका भी एक स्नैपशॉट ले लीजिए, केस स्टडीज एंड लाइव प्रोजेक्ट्स, राइट। जैसे कि आपने बोला कि आप रूरल मैनेजमेंट से हो और आपको मार्केटिंग में जाना है अगर, सो रीड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी ऑफ एशियन पेंट्स। और जो लोग मार्केटिंग से, उनको तो पढ़ना ही चाहिए कि लाइक एशियन पेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है। आप इंटरव्यू के सामने बैठोगे, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कैसे करोगे, राइट, अनलेस यू नो सर्टन रियल स्टफ। रियल मीन्स कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड स्टफ। मार्केटिंग प्लान फॉर HUL, फंड रेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ RGU, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, राइट। आज क्या कितना कुछ चल रहा है फाइनेंस इंडस्ट्री में, राइट। क्रिप्टो करेंसी आ गई, NFTs चल रहे हैं, राइट। बहुत कुछ हो रहा है फाइनेंस इंडस्ट्री में अभी, बहुत नई नई चीजें आ रही है। सो आप तभी कर पाओगे जब आपको प्रैक्टिकली आपने कुछ न्यूज आर्टिकल्स या कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, S&P इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट। सो क्रेडिट रेटिंग्स कितने टाइप की होती है। सो आप जब उस पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल में जाओगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टफ, ओके। तो इस तरह से यू नीड टू प्रिपेयर। ऑल राइट, नाउ बेस्ट प्रोफेशन फॉर ई-कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन डेलोइट। देखो, ये आपको चेक करना होगा कॉलेज में कि लाइक उनके क्या क्राइटेरिया हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेलोइट USI का तो कॉमर्स रिक्वायरमेंट होता है, commerce and those who are doing MBA finance, right? Why you choose MBA after engineering? What should be the answer? Why you should MBA? वैसे बहुत कॉमन चीजें हैं, MBA काफी लोग करते हैं इंजीनियरिंग के बाद।
So इसका simple answer ये है कि आप during the engineering you realize that you want to ultimately get into the management and you want to be a part of business development, right? So business MBA is more about managerial functions, right? Managing the people, and you find that more interesting, more challenging, and that's why you entered for MBA. लेकिन इसमें आपको फिर स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी फोकस करना होगा, आपने मार्केटिंग क्यों लिया है या फाइनेंस क्यों लिया. प्रीवियस एकेडमिक अफेक्ट्स प्लेसमेंट्स. यस, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कंपनीज के क्राइटेरियाज हैं कि हम 60% ही हमको चाहिए थ्रू आउट. तो ऐसे केस में आपके जो प्रीवियस एकेडमिक्स हैं वो आपके प्लेसमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं. कैन यू सजेस्ट सम गुड कंपनीज फॉर इंटर्नशिप फॉर अ फाइनेंस स्टूडेंट? जनरली देखो बैंक्स अच्छे, बैंक्स में अगर आपको मिलता है तो दैट्स अ गुड ऑप्शन. बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो रहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. और दूसरा, आप लोगों को लिंक्डइन के ऊपर काफी एक्टिव होना है, ठीक है? यू शुड बी सुपर एक्टिव ऑन लिंक्डइन. आप में से कितने लोग लिंक्डइन पर हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर ऑन लिंक्डइन? All right, so great. Like a lot of you are there on LinkedIn. Yes. So the point is कि LinkedIn के through आप internship अगर try करोगे, right? So that will be certainly very important, right? Do connect with me also. Okay, you whatever help we can provide to you, will provide to you as well, right? So कनेक्शन बनाइए, राइट? लिंक्डइन के ऊपर बहुत एक्टिव हो जाओ. जो लोग नहीं है लिंक्डइन पे वो लोग आइए और डू कनेक्ट विद योर सीनियर्स, faculties, people from industry and all those. So you will find that it will help you a lot in getting this. All right, so there are some more questions, but before we further proceed, I'll just again check with the coordinators, right? There are some activities in between, so yes, I'll hand over to Ayush. Yes, sir. Thank you so much, sir. That was such a great session. You have really enlightened us with the detailing about the companies and what is important for us and what's not important for us. So now I request Mr. Mayank Goyal, the Chief Coordinator of Finance Club, who is an instrumental in the development of this organization, to please say a few words. Hello, may I audible? Yes, sir. Thank you, Ayush. Thank you. Good afternoon to one and all. On behalf of IMS Finance Club, I am Mayank Goyal, Chief Coordinator of Fin Club, here to express a special thanks to our today's session guest, CA Gunjan Shimal sir, and I am Indore alumni, for accepting our short and sweet invitation and for being here with us today. Your thoughts and guidance have truly inspired our students, sir. And in our life, first things are always very special for us, whether it is a first school, first college, first salary, and anything. So every first thing has a special place in our life. Similarly, first job are also very special, and it is an entry from college to a corporate world, and it is a very biggest milestone in one's life. Like we can say that the campus recruitment process is a very vast topic in itself, and it has multiple aspects, and students have multiple questions regarding it, like which company to join, which sector to join, which company is better for ourselves, and whether to join a finance company or marketing company, what are the rounds that company conduct. And I think sir has covered all these questions very correctly in this today's session, and which will help students in near future placements of IMS.
And sky is the limit. It always begins with the belief. I think MBA placement is not the ultimate goal for us. College placements are not the way to reach your goal. You can look forward to numerous options to kickstart your career. Like some of these are off campuses, freelancing, entrepreneurships, government jobs, certificate courses from different sites, and identify your interest areas and start working towards them. Various online sites can help you to get your dream job as well. Some of these, like build your LinkedIn's profile very correctly, Indeed, Fresher World, Naukri.com, etc. So work on your interview strategies, work on your resume, and clear your basics of account and finance before placements, and get NISM's certificates related to your interest and all. So build a network with your alumni also, other persons who operates in your future line of work, because they can help you to enough to pass your CV in circles that you cannot access. I think so. And the Indian job market has grown rapid growth in the past few years, and we have 100 times more opportunities in near future. Although these are cascading effects of the COVID pandemic on the job market. Last but not the least, the road of success and the road to failure are almost exactly the same. Once again, thank you, sir, for joining the session and providing the right direction to our future managers. Thank you once again. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, as promised, it's time for the results of Vishleshan 2022, the budget analysis event. Vishleshan is an annual budget analysis competition for the students of the IMS, organized by the Finance Club in the month of February, which provides an opportunity to the students to list down their analysis and suggest changes that have been overlooked in the Union Budget 2022. It was organized in two rounds, first as an analytical report submission round, and second as a Wit Samvad, a panel discussion round. I again request Mayank Goyal sir to please announce the names of the winners. Okay, now it's time for result announcement for Vishleshan 2022. The winners are: first prize goes to Yiti Jain from MBA FA. Second prize goes to Vinay Thakre. Third prize to Muskan Agrawal from MBFA. Consolation prize goes to Ayush Upadhyay. And one more consolation prize goes to Talvin Kaur Bhatia. Jury members for this results was Dr. Arvind Paranjape, retired Chief Manager SBI, Dr. Mahesh Joshi, Assistant Professor, St. Paul College of Professional Studies, Dr. Jitendra Talreja, Assistant Professor, Shri Vaishnav College of Commerce, Dr. Priyanka Chawla, Faculty, Delhi College of Business Management, Dr. Manish Kant R, Associate Professor, IMS DAVV. And the winners for With Samvad panel discussion was panel 3, first Bharat Rathi, Mitali Patidar, and Shikhar Narayan Chandrol. And the first runner-up, panel 4, Muskan Agrawal, Anita Solanki, Avni Gupta, Talvin Kaur Bhatia, and Harsh Simle. So congratulations to you all, and you have collected your certificates from institute itself. Thank you. Ayush, please continue. Yeah, congratulations to all the winners. Sir, are we taking more questions right now? Yeah, so again, many congratulations to all the winners. I am fine. Like if somebody has any quick questions, we can have it. And then we'll wrap up the session, right? So I think we were discussing about the academics, like I covered that one. Then internships, right? As Mayank mentioned, I think very rightly, I just covered almost everything related to that. What all things that you can do apart from creating a LinkedIn profile? What duration of internship is ideal? Ideal as such, 30 to 45 days, I think is a good one. In MBA program, I study CSR as a subject, so there is need of any CSR certification. CSR is subject, no, not really. CSR, not exactly any certification is required. See, like whenever you are deciding about getting any certification, just think
is it in line with whatever company you are targeting, right? Just because somebody is giving any certificate, okay, it's not right. If it is in line with, if you are looking for some opportunities, then in that case, you can go for that. Okay, which bank hires MBA rural development? As I told you, like rural development, any company may hire who have the plans of expanding into rural markets. Does Deloitte has any criteria? Yeah, please. Sir, if I have done some certification and that doesn't align with my profile that I am going to apply, should I mention it in my resume or let it aside? You should mention it. You can mention it, but preferably those things which are in line with the job requirement. They will be better to, highlight more in the resume. Right. For example, I tell you, like I know few people who have done digital marketing. Right now, if somebody is going for kind of core equity research roles and they have done the digital marketing certificate, okay, so it should not be like too much highlighted, because then they will question why if you're interested in digital marketing, why you're opting for equity research, right? So it should be like written in some extra skills or some other skills, rather than highlighting too much about those particular certificates. Right. Does Deloitte has any criteria for academics or internships or drop year? Criteria, as I told you, like it is, you should definitely check once with your college, but generally speaking, USI basically is more about commerce background and core finance, right? I don't think that they are at all concerned about your internships, whether you have done it or not. That I am quite sure that they are not concerned about internships. In MBA program, okay, all right, this is done. What is the knowledge management Deloitte is coming for this profile? Knowledge management is about kind of, so they have 3-4 verticals in that. One particular thing is related to creating standard operating procedures, right? Any company who wants to standardize their procedures, right? They reach to Deloitte knowledge management team and they standardize their procedures. So you have to first understand the process, complete process, and then you have to standardize it. Okay, standardize meaning step by step, right? अगर कोई process company के अंदर randomly हो रही है, तो उसको random करने की बजाय you should be able to do it in a sequential basis, right? So there are a lot of requirement for such kind of roles. Okay, बहुत सारी companies में ये requirement होती है. Right. So this is all from my side. Yes. Any other question anybody is having? Just let us know. Sir, Yes. being a HR student, we have two types of industries for the interview, like manufacturing and IT. So particularly for manufacturing sector, what subjects need to be focused for PI? Basically, you should focus more on the organizational behavior, right? That is one subject where there are questions that arises out of it, and then there are questions which are related to, sometimes it is related to theories also, some good HR theories, right, which have really been quite successful. So that you can focus, but per se subject wise, it is OB that you can focus on. Okay. Yes, sir. Thank you. All right. Yes, sir. All right. So once again, I thank you everyone for your patience listening. Right, it's almost 2 hours, and I believe that you must have noted down few points. I just in the nutshell, I just tell you like what we have discussed. Prepare well for the selection test. Prepare a very impactful resume and introduction. Present your internship and live project according to job profile. Prepare certain case studies pertaining to target jobs. Create LinkedIn profile
and set your expectations, right? Whenever it's time to select your jobs, right? Set your expectation and do definitely give mock interviews and mock GDs, right? So this is all which I could think of at this moment. And once again, I thank you, IMS Finance Club, Ayush, Mayank, all the dignitaries of IMS, and all of you who have paid attention to this particular session and who really started well in time for their campus preparations. Again, I wish you all the best for your jobs, whether it is campus or off campus, and wish you all the best for your success and career. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Aditi Pandey, Finance Club Coordinator, for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. This is Aditi Pandey, member of Finance Club. And on behalf of all the students, I would like to extend our gratitude towards our chief guest, K. Gunjan Shrimal sir. Thank you so much, sir, for your guidance and noteworthy session. All the knowledge you have imparted on us will help us a lot in our future placement preparation and will guide us to choose what's best for us. Now, I would like to thank our faculty members, without whose support this session would not have been possible. Firstly, I would like to thank Director Professor Sangeeta Jain ma'am, Faculty Coordinator Dr. Manish Kant Arya sir, Twin Club Committee Member Chief Coordinator Mayank Goyal sir, and all the committee members for successfully coordinating this session. Ayush Upadhyay, Saloni Jain, Muskan Agrawal, Pooja Saluja, Mitali Patidar, Rohit Arya, Shilpi Kushwa, and Tarun Pawar, and Anika Agrawal too. Thank you everyone for joining this session. All the participants can leave the meeting now. Thank you so much. थैंक यू वंस अगेन सर फॉर ज्वाइनिंग, और इसी तरह आपको और हम परेशान करेंगे आगे कुछ सेशंस के लिए और सर, ताकि स्टूडेंट्स को और बेनिफिट हो फ्यूचर प्लेसमेंट सर. Just anytime. Thank you very much, Mike, for your nice words. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye.